नमस्ते बिटिया, खुश रहो बिटिया. IGVN Dr Namrata N, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, Faculty of Homeopathic Science of JVWU Women's University, Jaipur. I had discussed in previous session about eczema, differential diagnosis of eczema, complication of eczema, and clinical feature of eczema. Now, diagnosis of eczema. We will discuss about diagnosis of eczema, investigations and management, and last one, homeopathic management of eczema. Now, diagnosis of eczema should be done on following basis: itching, exudative plaques surrounded by papillomvesicles. This condition acute eczema, and chronic eczema lichenification. What is lichenification? Lichenification means increased skin markings, a hyperpigmentation of the skin, and thickening of skin may be a prominent feature of chronic eczema. There may be personal history of other atopic disease, family history of any atopic disease, and first degree relative in children under 10 years of age. This history prominent in atopic dermatitis. Now, investigation patch test. It is useful to find out the cause of allergic dermatitis, button, irritant, eczema. Photo patch test. This test is done to find out the cause in case of photoallergic contact dermatitis. Next one is prick test. Next one is serological test. Measurement of total serum IgE elevated and IgE antibodies specific to certain antigens can be helpful in atopic dermatitis. Now, swab test. Bacterial and viral swab test for culture and microscopic examination in the cases of suspected secondary infection. स्वैब टेस्ट कोविड-19 में भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कोविड-19 में भी स्वैब टेस्ट ही किया गया था. तो उसकी वजह से भी निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा बढ़े थे. तो स्वैब टेस्ट कैसे करते हैं? स्वैब लेंगे, उसे डिटेक्ट करेंगे कि बैक्टीरिया है कि वायरस है. ओके, और इसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस तो नहीं हैं. नाउ मैनेजमेंट ऑफ एक्जिमा. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कन्वेंशनल मैनेजमेंट. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, removal of triggers like contact allergens, irritant and contact dermatitis, aggravating factors in atopic dermatitis, proper hydration of skin to prevent dryness. Conventional treatment, topical application of corticosteroids, systemic steroids, topical or systemic antibiotics, and topical corticosteroids and infected lesions, and antihistamine therapy and allergic dermatitis. And topical application for smoothing, moisturizer. So, in conservative management, proper hydrate of the skin to prevent dryness. So, complication may convert now dermatitis. Now, homeopathic management. First medicine is sulfur. Characteristic feature of sulfur is dry, scaly, unhealthy. Every little injury suppurates. सल्फर पेशेंट की स्किन ड्राई रहेगी, स्केलिंग रहेगी, अनहेल्दी स्किन रहेगी और एवरी लिटिल इंजरी सपोरेट होगी. इचिंग, बर्निंग, वर्स, स्क्रैचिंग एंड वॉशिंग एंड स्क्रैचिंग से कंडीशन इंक्रीज होगी.
Next, pimply eruption. Pimple eruption means papule बनेगा, pustule, फिर raggeds and hangnails. Excoriation, especially in folds, means flexed surface. Next, another medicine is lycopodium. Next, skin affections after local medication. Pruritus, especially from warmth, is evening, often reoccur in springtime and in damp weather. Next medicine is serenum. Dry, lusterless, rough hair, intolerable itching, herpetic eruptions, especially on a scalp, bands of joints with itching, worse from warmth of bed. Third, eczema behind ears, crusty eruptions all over. सोरेनम पेशेंट में ड्राइनेस रहेगी, हेयर रफ रहेंगे, इंटॉलरेबल इचिंग रहेगी, herpetic eruptions के स्पेशली ऑन स्कैल्प, बैंड्स ऑफ जॉइंट्स में अभी प्रीवियस मेडिसिन में पढ़ा था अपन ने सल्फर एंड लाइको. ठीक है, सल्फर पेशेंट की इचिंग भी वार्मथ ऑफ बेड से वर्स होती है, एंड सोरेनम पेशेंट की इचिंग भी वर्स होती है वार्मथ ऑफ बेड से. ठीक है, स्पेशली इसमें जो एक्जिमा रहेगा वो बिहाइंड ईयर्स. नेक्स्ट वन मेडिसिन ग्रीफाइटिस. रफ हार्ड persistent dryness of portions of skin unaffected by eczema. Eruptions oozing out a sticky exudation means जो वेसिकुलर इरप्शन होगा उसमें से जब डिस्चार्ज एक्सुडेट होगा तो स्टिकी होगा. Now rawness and bend of limbs, groins, neck, behind ears, unhealthy skin, every little injury separates. Ulcer discharging a glutinous fluid, thin and sticky. Cracks in nipples, mouth, between toes and anus. Eczema, especially face with glutinous moisture, means thin or sticky discharge with or without eruption. Itching with Itching without eruptions, medicinal dolichos. Next symptom is skin chap and crack and often become excoriated and bleed. Crust form on lips and chin covered with eczema. Now petroleum. Petroleum is a very good medicine for eczema. Itching, especially at night, skin dry, constricted, very sensitive, rough, and crack, leathery. Leathery means acanthosis appearance. Intertrigo, thick greenish crust, burning and itching, redness, raw, cracks, bleed easily. Eczema, raggeds worse in winter. Vascular eruption forming thick scab under and oozing pus, skin harsh and dry, deep cracks and fissures which bleed and separate. मेनली स्किन ड्राई रहेगी, एक्जिमा की कंप्लेन विंटर में ज़्यादा एग्रावेट होगी, वेसिकुलर एरप्शन रहेगा, वाटरी थिन डिस्चार्ज रहेगा एंड क्रैक्ड स्किन रहेगी. नाउ आर्सेनिक एल्बम, डलकामारा एंड मिजेरियम. आर्सेनिक एल्बम, itching, burning, swelling, edema, eruption, papular, dry rough scaling, aggravated cold and scratching. Scratch until the skin is raw, then it burns. All night itching and burning alternate. Discharges are putrid and excoriating. ठीक है, इसकी जो itching और burning रहेगी वो नाइट में ज़्यादा रहेगी एंड डिस्चार्ज प्यूट्रेट रहेंगे, एक्सकोरिएटेड रहेंगे. डलकामारा में प्रोराइटिस ऑलवेज वर्स इन कोल्ड एंड वेट वेदर बिकॉज डलकामारा जो मेडिसिन है वो डैम्पनेस की मेडिसिन है. वेसिकुलर इरप्शंस रहेंगे, सेंसिटिव ब्लीडिंग, अल्सर्स, थिक ब्राउन येलो क्रस्ट, ब्लीडिंग व्हेन स्क्रैच, eczema of infants, eruption on face, forehead, nose, but especially on cheeks, which become completely covered with these crust. Worse in cold, damp weather. Miserium. Next medicine is Miserium.
eczema, intolerable pruritus, worsen bad like sulfur, ulcer, itch and burn, surrounded by vesicle and shining, fiery red areola. Eruption, ulcerate and form thick scab under purulent matter, exudate. Thank you.